Good evening, all of you. We are right here for our orientation of the test series program. Test series, why is required? When you are done with your syllabus, when you have prepared your syllabus in a complete manner, you need to develop the perspective of answer writing. Perspective of answer writing surely requires understanding of content. Without understanding the content, you certainly cannot write anything. But then once I have learned, and while learning, like we in our center very clearly take up, learning is synonymous to writing. So we keep on writing. Every topic, we try to take up the questions and try to attempt up the assignments to it. So the question arises, when we were consistent with our answer writing practice while preparing the content matter, why we need to take up the separate test series? Because I hope all of you will agree to it. I have muted all of you precisely just to maintain the overall decorum of the class. You can certainly drop in the chats wherever you are encountering any question, query that crops up in your mind, because in such sessions, you definitely can evolve out certain type of query, and do drop in if there is any problem that you are facing in terms of voice quality or screen share, because I'll be majorly talking about with the sample examples of answer framing. That will make more sense. To begin with, why we need to practice answer writing, why there is the requirement of practicing answer writing, that too after complete syllabus is done. I'm very sincerely believing that all of us right there in this particular orientation class are those students who are hopeful of their positive prelims result and will be writing 2022 main. So should I take it that it will be in vain for the students who don't qualify prelims this year or who have not taken prelims this year? They should not think about test series and writing it. No, that is not the case. The way you learn a topic in your geomorphology, stalagmite, every year you will be adding something which will add up to your reference of the building up of the information. Why it is so that an aspirant in one attempt fails to qualify even prelims, second attempt qualifies prelims, fail to qualify main, and third attempt attains rank and rank that too in the top 10. Why it happens? Syllabus do not change every year. Approach of question paper do not change every year. We don't have the nature of competition that fluctuates that much. That one year there were many lakhs of students and another year it was only 10,000 that appeared. It never happens like this. It gives me a very sound example. It gives me a very convincing argument that it is that we are building over. And one very important thing that I want to say, after completing your syllabus, you need to get into the answer writing practice, because complete knowledge of syllabus gives you the possibility to take into consideration correlation. Integration is key. In our optional, integration is the bottom line. Now you talk about integration from the perspective of your papers, integrating world geography with Indian geography. You talk about the integration again in terms of your syllabus, integrating physical geography with human geography, or you take integration that is static topics with the dynamic approach. It doesn't come overnight. It has to be worked upon. And when I say static topic with the dynamic one, this is where case studies or examples comes into limelight. And that becomes very important. If you are not involving that spontaneous list of, and you have to create it actually. You have to create out a spontaneous list of case studies, taking 1 year into account, jo contemporary hai, jo fresh hai. Once you take that into, it should be there in your mental frame. And once you encounter a question of the case studies that you have jotted down, you should readily be in the position of recalling that this I can write to prove my point. That is called integration. Another dimension of integration is integrating diagrams. Static standard diagrams are very common in physical geography. I have got the diagram of cirque. I have got the diagram of plate boundary. I have got the diagram of structure of tropical cyclone, and so on and so forth. I also have got the static set of diagrams when it comes to human geography, largely the models, theories, laws in human geography. I can draw von Thunen diagram, I can draw Alfred Weber diagram. I can also create out diagrams that is related to Rostov's growth model.
because Perox, Bordwilli, Rostov are written in models theories. That is the reason I quoted that example. So there are certain standard diagrams that are there in human geography also. For rest of the topics, you have to create out the diagrams. And that is what is the integration last final. And geography is ... to be continued. Geography is that discipline. Rather, let me put it like this. UPSC preparation is like this, that it is never with full stop. It always goes with open-ended edge. To be continued. And if you maintain, if you develop that as your motto, to be continued, no one is going to stop you in attaining success. Now, because we have decided 2 days of the orientation class, I have decided to chart out physical and human geography kind of topics in making us understand how exactly we approach with the answer. Physical geography, ज़्यादातर students आसान समझते हैं in content building. I thereby begin with human geography today. I have taken, to give you a warming up effect, I have taken what was considered to be difficult questions in the last main examination. उसी से लेकर शुरुआत करते हैं. क्वेश्चन को फ्रेम अप किस तरह से करें, कैसे डिसाइफर करें, यही लर्न करना है हमें टेस्ट सीरीज में. Once you are faced with the challenge in norm of questions, where the added challenge is the time restriction. आप उस limited time में कितनी swiftly, कितना convincing answer लिखते हो, that makes and breaks your attempt. Uncertainty तो इतनी है कि आपको जिस साल लगेगा कि इस साल मैंने क्लियर कर लिया, उस साल शायद आपका पॉजिटिव रिजल्ट आया ही नहीं, और जिस साल आप कहो कि नहीं मेरा इस बार कुछ इतना खास अच्छा नहीं हुआ, उस साल आपका रिजल्ट पॉजिटिव हो गया. Uncertainty is there, acknowledge it. Competition is of very high level, acknowledge it. There is no full stop to its preparation, acknowledge it. And also acknowledge you are not required to be intellectual to clear this examination. तो करें क्या, वही समझने की कोशिश करते हैं. So without wasting much time, I'm straightforward going on to the screen share. I want to put my point with reference of some examples. कुछ questions हमने UPSC के पूछे हुए questions से लिए हैं, और कुछ questions हम लेंगे हमारे टेस्ट सीरीज से, जो हमने पूछा हुआ है पिछले 2-3 सालों में टेस्ट में, उसका एग्जाम्पल लेकर आपको जस्टिफाई करेंगे. आई एम नॉट गोइंग टू शो यू आपको कैसे मॉडल आंसर प्रोवाइड करेंगे, दैट इज नॉट. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ डू यू अप्रोच अ गिवन क्वेश्चन in terms of its maximum marks, in terms of its content building. Okay, so getting on to the screen share quickly. I need a go ahead from all of you. Is it that all of us are having a clear view of whiteboard? That's great. Now please concentrate and understand what I am trying. I'll be attempting some questions and I'll just try to convince all of you how to go about with its answer writing. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूपीएससी वाला क्वेश्चन पिकअप कर रहे हैं. आई एम राइटिंग क्वेश्चन, कीवर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन: प्रोसेस ऑफ कंटेजियस एंड हायरार्किकल डिफ्यूजन इन एड्रेसिंग रीजनल इम्बैलेंसेस. दिस वाज अ 10 मार्कर क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन. अब इसमें की टर्म्स को पकड़ने की कोशिश करो और टॉपिक्स का इंटीग्रेशन को जज करने की कोशिश करो. पहला की टर्म हम पकड़ रहे हैं डिफ्यूजन, और दूसरा की टर्म हम पकड़ रहे हैं रीजनल इम्बैलेंसेस. डिफ्यूजन इज द कंसेप्ट दैट कैन इजीली बी कोरिलेटेड विद द टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस. द टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस दैट इज पर्सपेक्टिव्स इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, because it is in that topic. So let me just attempt it here. Diffusion is what I'm talking about. So this is derived from your syllabus topic called perspectives. I'm just writing perspectives. I don't want to write anything beyond. It is from the topic of perspective for 2 reasons. It is in the syllabus of perspective that you have got the mention of cultural regions, and basically it is in cultural regions that we talk about path and diffusion. I hope all of us are agreeing to it. Path and diffusion basically comes up with the cultural regions, right? So I take one reason that this term that was asked in examination is basically the question from perspective. Second reason why I can say it was from perspective is that I have got time geography. That is when I take the different types of dualism in geography, dichotomy in geography. We do take chronology versus chorology. So time geography is also there in geographical thought syllabus. Time geography of Haggard Strand. तो वही conclusion हो गया
diffusion comes up from the topic of perspectives in development of human geography. I'm convinced. But there is another term which is mentioned in the question, and that is regional imbalances. तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत तो है नहीं. It is related to the topic of regional planning. Is it not coming very evident to all of us that this question, though it is a 10 marker compulsory question, is making integration of two topics of our syllabus? How will I frame the answer? It is creating integration of two topics of our syllabus. One is perspective, two is regional imbalances. So I have to integrate that. How will I write the answer? If I just think on the conventional track, if I just think on what is called a static frame, तो आप क्या करोगे? दो अलग अलग पार्ट का आंसर बना दोगे. One is talking about diffusion and two is talking about regional imbalances. पर उसको आपको एक consolidated, well convincing, your approach of answer writing बनाना है तो क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनो. Process of contagious and hierarchical diffusion in addressing regional imbalances. Do I sound logical? That your answer to this question, I'm just scrolling up here and zooming. Your answer must begin. I'm labeling it as point 1. Concept of diffusion. When you talk about diffusion, you talk about spread. Spread of ideas, spread of method, spread of techniques. And this spread includes two prominent types. One is called relocation. Fundamental concepts of geography के साथ relate होता है ये. And two is expansion. बिल्कुल basic concept of diffusion. You have defined what is diffusion. Then you are talking about there are two types of diffusion. Relocation that goes with people, and expansion that is the spread due to the ideas or the technology, wherein we are talking about the social media, mass means of communication, and many more things. It is with expansion because you have to address the terms that are being asked. It is with expansion that creates snowball effect. हुआ ना अग्निपथ का पूरा अग्निपथ agitation, snowball effect. So that snowball effect is identified with, सारे मत भी लिखो पर दो टर्म तो क्वेश्चन में है, लिखने पड़ेंगे. Includes hierarchical diffusion and contagious. जब तक आपने एग्जामिनर को टर्म्स का मीनिंग प्लॉट नहीं करा, माइंड इट्स अ 10 मार्कर क्वेश्चन. जितना समय हम ले रहे हैं समझने में, उससे कम समय में आपको फ्रेम करके लिखना पड़ेगा, नहीं तो इट विल गो आउट ऑफ योर हैंड. तो आई नीड टू बी सो एप्ट, आई नीड टू बी सो परफेक्ट कि क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे दिमाग में फटाफट से फ्रेम आ जाए. अब आपको ब्रीफली डिफाइन करना चाहिए व्हाट इज मेंट बाय हायरार्किकल डिफ्यूजन एंड व्हाट इज मेंट बाय कंटेजियस डिफ्यूजन. तो एक एक लाइन का डेफिनेशन तो जरूर से बन जाता है, क्विकली लिख देते हैं. आई होप यू आर रिकॉलिंग. एक बात हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, टेस्ट सीरीज में आप कंटेंट लर्न जरूर करते हो, बट टेस्ट सीरीज का मतलब ये है कि आपने स्टडी कर लिया, आपका सिलेबस कवर हो गया. जब आप टेस्ट लिखते हैं तो आप अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम पॉइंट्स को जज आउट करते हो कि मुझे ये वाला टर्म नहीं पता, आई कुड नॉट रिकॉल इट व्हेन आई एनकाउंटर्ड इट. सो यू गिव योरसेल्फ अ डिजाइन्ड पुश कि मुझे इसकी तरफ ज्यादा काम करना है, ये वाला आई कुड मैनेज. तो टेस्ट का बेसिक पर्पस वो है. तो कहीं पर भी डिसहार्टेंड फील नहीं करना कि आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट, सो व्हाट शुड आई डू एंड आई ट्रिगर माई पैनिक बटन. दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. एक डिफाइन कर लो, ये चीजें पूछी गई हैं, मुझे याद नहीं आ रही, मुझे याद करना पड़ेगा. सिंपल थिंग. हायरार्किकल एक्सपेंशन व्हिच इज द टाइप ऑफ अ डिफ्यूजन is basically correlated with spread of feature or trend that originate. अब ध्यान से देखना क्लास, हम कैसे वीव कर रहे हैं इसको, तभी आंसर बनेगा, नहीं तो आंसर नहीं बन सकता. That originate at a given node, हम सिर्फ नोड लिख देते हैं, within the region to diffuse, within a region to diffuse, छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए. And contagious is identified to be widespread. It doesn't go rank by rank. Spread of the feature or trend which is originating at the node and is spreading. Spreading that is hierarchical, gradual, step by step. And when I talk about contagious, what is the meaning of the term contagious? It is spreading like wildfire, है ना. आपने एग्जामिनर को ये वाला एक्सप्लेनेशन दे दिया,
अब इस एक्सप्लेनेशन को देने के बाद इमीडिएटली क्या करना चाहिए, आपको रीजनल इम्बैलेंस को रोप इन करना है। अब रीजनल इम्बैलेंस को रोप इन करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स जस्टिफाई करें। कुछ एग्जाम्पल्स किस तरह से जस्टिफाई करें, जरा देखते हैं। हायरार्किकल एक्सपेंशन, डिफ्यूजन for addressing regional imbalance can easily be applied with. Now this is my example. आपका एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग जरूर हो सकता है, because you can cite example from any of the case. The example that I am trying to take, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे. I am roping in both the cases. I am picking up example with base of diagram and some content building. So I have purposefully changed the color. ध्यान से देखो. Morphogenetic feedback, development और equation. सोच कर देखो, अच्छा एग्जाम्पल है. इसके अलावा आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो. Like you are aware of the fact that when we talk about cumulative causation and spatial interaction of Mridal, is he not talking about to and fro kind of vibrating movement of the node and the periphery? Give me go ahead. आप वो एग्जाम्पल ले सकते हैं. बट इफ यू टेक दैट एग्जाम्पल, होगा क्या, आपने एक ओपन एंडेड क्वेश्चन के लिए एक ओपन एंडेड एग्जाम्पल दे दिया. जब आप नोड एंड पेरिफेरी रिलेशन ऑफ रीजनल इम्बैलेंस का एग्जाम्पल लेते हो, सुमरडाल का ले लिया या आपने फ्राइडमैन का ले लिया, तो यू आर कोटिंग अनदर एग्जाम्पल ऑफ द हायरार्किकल सेटअप. रूरल अर्बन फ्रिंज ले लो, सैटेलाइट टाउन ले लो, अर्बन स्प्रॉल ले लो, कुछ भी ले लो. ट्राई टू एड्रेस द पॉजिटिव फैक्टर्स रिलेटेड टू इट. अब बहुत ध्यान से देखेंगे हम इसको किस तरह से एसोसिएट करके जज करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, एक सिंपलर डायग्राम से बनाते हैं. बेनिफिट्स ऑफ रूरल अर्बन फ्रिंज, खुद से सोच कर देखेंगे. आई डोंट थिंक एनी वन ऑफ अस विल फाइंड इट टू बी नो, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट. इट्स समथिंग विच ऑल ऑफ अस आर अवेयर. बस एट दैट गिवन पॉइंट इन टाइम हमारे दिमाग में आए तो बात है. बेनिफिट्स ऑफ रूरल अर्बन फ्रिंज इज रिलेटेड टू cautious, new larger roads that provides room for expansion, new economic activities. It can be anything: recreation, manufacturing, agro based activity, any activity. Why? Because of cheap land demand and land value in rural area is always less compared to urban area. एक और डायमेंशन क्रिएट कर सकते हैं. हाउसेस अफोर्डेबल एंड क्लोज बाय, डिक्रीजिंग कम्यूटिंग टाइम, डिस्टेंस, इन्वेस्टमेंट, कोई भी चीज ऐड करना चाहो. इसके साथ आप और भी ऐड कर सकते हो. एनवायरमेंटल फ्रेंडली, यू कैन ऐड सस्टेनेबल, बिकॉज लेस कंजेशन, लेस पोल्यूशन बाय डिफॉल्ट मेक्स इट मोर अट्रैक्टिव. अब आप खुद से थोड़ी देर के लिए ध्यान से सोचो. आपने सेटलमेंट ज्योग्राफी से एक बड़ा ही टिपिकल टॉपिक जिसको आप कहते हैं रूरल अर्बन फ्रिंज, उसका एग्जाम्पल लेकर एग्जामिनर को ये प्रूफ करने की कोशिश की कि हायरार्किकल डिफ्यूजन विच गोज स्टेप बाय स्टेप कैन क्रिएट newer opportunities to the area which is economically lower hierarchical than urban place. Have you not justified that hierarchical diffusion is capable of minimizing regional imbalance? I need a go ahead. सोचते हैं हम इस लाइन में, ये चाहिए आंसर राइट इन प्रैक्टिस. और ये तभी आएगा when you are learning settlement. तब आप सिर्फ सेटलमेंट ही तो पढ़ रहे थे ना, तब आपने रीजनल ज्योग्राफी नहीं पढ़ा. Then you started with regional geography, तब शायद आपके राडार पर पर्सपेक्टिव नहीं था, फिर इवेंचुअली पर्सपेक्टिव को स्टडी करा. अब आप तीनों को इंटीग्रेट कर रहे हो, तभी तो आपका आंसर तैयार होगा, नहीं तो कैसे तैयार होगा. एंड व्हेन आई टेक द रेफरेंस ऑफ कंटेजियस और वाइड स्प्रेड, कंटेजियस और वाइड स्प्रेड का ज्यादा इफेक्ट इन टू एंड फ्रो मूवमेंट पर नहीं आता, बट कंटेजियस इन रीजनल इम्बैलेंस. इसको आपको किसके साथ एसोसिएट करना चाहिए? Population as social capital, generation of aware is well informed, not misinformed, mobilization of grassroots for area, community, specific objective. अब इसके बाद मेरे ख्याल से आप बहुत आराम से एग्जाम्पल ले सकते हो. Can all of us recall that here I can pick up
the bottom up strategy and can take any example of mass participation towards attainment of certain objective. आप इंडिया के भारत निर्माण का एग्जाम्पल लेकर केस स्टडी डाल दो, या वेस्ट अफ्रीका का ग्रेट ग्रीन इनिशिएटिव लेकर डाल दो. ग्रेट ग्रीन इनिशिएटिव ने कैसे रीजनल इम्बैलेंस को जस्टिफाई करा? कम ऑन, it has created containment of, careful, it has created containment of food insecurity in Sahel region. Come on, I need a confident go ahead by all of you. कुछ बात समझ में आ रही है? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम में से कोई भी ऐसा है जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं. We all are informed, we all are done with our syllabus and we have the confidence that yes we can do. But एग्जामिनेशन हॉल में सबसे चैलेंजिंग टास्क क्या है? एग्जामिनेशन हॉल में सबसे चैलेंजिंग है टाइम. मेरे पास टाइम की लग्जरी नहीं है. एज सून एज आई एनकाउंटर द क्वेश्चन, मेरे दिमाग में एकदम मेंटल फ्रेम तैयार होना चाहिए. अगर वो मेंटल फ्रेम तैयार नहीं है तो वो डेफिनेटली मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. और आपको अगर उस प्रॉब्लम को कंटेन आउट करना है तो यू नीड टू कम अप विद द प्रैक्टिस. एग्जाम्पल्स जैसे हमने दिया, भारत निर्माण लिख दो, ग्रेट ग्रीन इनिशिएटिव लिख दो, छोड़ दो इसको. reclaiming of salt affected areas in the countries of southern Africa, आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हो. These examples keeps on cropping in randomly as examples on environment, mass movement of the people towards certain important thing. You should jot it down. और केस स्टडीज ऐसे तैयार होने चाहिए जो आपका पॉइंट में इजिली याद आ जाए. इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ. हैव यू गॉट द फील आइडिया क्लास? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं. व्हाट वाज द नेचर ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम वेयर वी डेविएटेड? प्रोसेस ऑफ कंटेजियस एंड हायरार्किकल डिफ्यूजन इन एड्रेसिंग रीजनल इम्बैलेंसेस. योर आंसर हैज टू स्टार्ट नॉट विद व्हाट इज कॉजिंग रीजनल इम्बैलेंस, क्योंकि केस स्टडी में आप उसको प्रूफ करोगे. जब आपने रूरल अर्बन फ्रिंज सेलेक्ट करा या नोड एंड इट्स पेरिफेरी सेलेक्ट करते हो तो प्रूफ करोगे ना कि देयर इज डिफरेंस इन द डेवलपमेंट. सो स्टार्ट योर आंसर विद what is the concept of diffusion. Once you have given that, you have identified hierarchical and contagious diffusion, it automatically, that goes with expansion, you have automatically created the answer. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पहले यूपीएससी लास्ट क्वेश्चन पेपर से, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा इंटर रिलेशन में कुछ अपने एग्जाम्पल्स को जस्टिफाई करें. चलो, I go to the next question for the day. Small numbers of mega cities. You know, with my interactions with the students who attempted this main examination, जो उनको लगा था कि बहुत difficult question है, हमने उन्हीं में से कुछ select कर लिया. Just to make a point कि जो लगता है first reading में difficult, वो इतना difficult होता नहीं है. आपको just एक poised mind से, confined, बिल्कुल controlled mind से उसको judge करने की कोशिश करनी चाहिए. चलो, I continue to give the snippet names of the terms that was asked in this particular question. ठीक है? So the question was a small number of mega cities are playing key role in mega cities, global economies, culture. Question settlement geography का है, बिल्कुल है. Economic geography का है, बिल्कुल है. Cultural geography, so human geography perspective उसका भी है. कैसे फ्रेम करें इस आंसर? What should be the way I should frame up this particular answer? You have to start your answer with a very important requirement, a very important information actually, and that is correlated with urbanization. हम आपको ना एक की सपोर्ट देते हैं, अगर आप एग्री करते हो तो फटाफट से बता देना. Sustainable development goal that relates to sustainable urban environment. I am talking about which sustainable development goal? फटाफट से बता दें. Sustainable development goal dash sustainable development of urban places. I'm talking about that class 11. Shabash. So when you talk about sustainable development goal 11, it basically gives me the development of safe and resilient. Reason, urbanization is on growth. And when I take up the reference of megacities are accounting for very dense clustered. Technical term का इस्तेमाल कर सकते हो, very dense cluster. So you are basically introducing your answer with this. So it is very dense clustered, intensive acumen.
When I take reference of mega cities are identified with very dense clustered characteristics. When I talk about this very dense clustered characteristics, population density varies from one location to other, so we cannot go with a standard example for it, but you can cite some examples to justify. For the countries like India, we all know that the mega cities are considered to be class 1, rather top class category of class 1, and that qualifies to be million plus settlement. So you can take that into consideration to apply it. You give examiner mega cities first. अच्छा, अब इसके बाद क्या करो, इसके बाद पॉइंट 2 लिखने के लिए यहीं पर ही लिखते हैं, स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, या आई जस्ट टेक इट हियर. पॉइंट 2 क्या करें, माइंड में मार्क जेफरसन को पिकअप कर लेते हैं. Because as I pick up Mark Jefferson as my case, as my sample example, what is the concept that Mark Jefferson propounded? Mark Jefferson propounded primate city concept, and in primate city concept he talked about mini country. Support आएगा class बहुत आराम से in this answer. I hope you are creating that spontaneous continuity to it. I hope all of us are creating a spontaneous continuity to it. Yes, all of us? अच्छा, क्वेश्चन पूछ रहा है मेगा सिटीज एज कल्चरल एंड ग्लोबल इकोनॉमी, तो मैंने अपना सपोर्ट ले लिया प्राइमेट सिटी से. मेगा सिटीज आर डेंस क्लस्टर्ड इंटेंसिव एक्यूमेन. प्राइमेट सिटी भी तो वही है. प्राइमेट सिटी इज कंसिडर्ड टू बी मिनी कंट्री बिकॉज इट इज इन्वॉल्विंग the reflection of all cultural diversity that is possessed by a given country, and it is also the node of all technological know-how, level of economic development. Come on, I hope you are understanding. And third point, I think after these points you will not find it difficult. Third point यहाँ लिखते हैं क्योंकि I want you to see the question. हैंड इन हैंड क्वेश्चन पर बार बार नजर डालते रहो. थर्ड पॉइंट क्या लिखे, थर्ड पॉइंट ये लिखते हैं दैट अर्बनाइजेशन इज इंजन टू इकोनॉमिक ग्रोथ एज relates to higher rank, you can write it hierarchy of economic activities. Come on, मेगा सिटीज. अब यहाँ पर देख लीजिए, आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को पिकअप कर रहे हो, स्क्रॉल करेंगे यहाँ. पहले बताओ 3 पॉइंट का लॉजिक क्लियर हुआ, 3 पॉइंट का लॉजिक क्लियर हुआ. कल्चर इज ऑल एनकम्पासिंग टर्म. Culture incorporate everything, the language, the religion, the clothes, the food, the ideology that I follow. As cultural geographers, which cultural component we take as a dominating factor? We take economic activity as a prominent factor. और इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ आप अर्बन एरियाज को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. अब यहीं पर ध्यान से देखेंगे, अर्बनाइजेशन एज द इंजन्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ relating to higher ranking economic activity. यहीं से आप अपने आंसर को आगे बढ़ा सकते हो. कैसे बढ़ा सकते हो? Developed region. It is progressive case in developing countries at the verge of demographic revolution combined with over pressurized agriculture do add increasing vulnerability. Urban refuge, very important term, is here. If urban refuge is here to stay in maximum of the developing countries, do I sound logical? I just want to stop screen share for a while. Do I sound logical that you are talking about urbanization, urbanism as the process, as the mechanism which is right here for the developing countries that are projected with maximum growth of population in coming few decades? And if that will be the case, what is the purview of primate city that says that mega cities will be the cultural diversity or cultural adorn, is marking up its sustained purview. And in between, when I take up the reference of economic activity, वहां पर एक point add करते हैं before doing that. What is the frame of this particular answer as I advised? You take support of the process of urbanization as your introduction to justify
Urbanization is leading to the growth of intense acumen as the top ranking hierarchy. To prove its cultural and economic centrality, you take support of primate city. उसके बाद आप वे फॉरवर्ड करके डेवलपिंग कंट्रीज का एग्जाम्पल दो. इन बिटवीन आप क्या कर सकते हो जो आपके आंसर को इफेक्टिव बना दे. वहीं पर हम आपको कह रहे थे इकोनॉमिक एक्टिविटी को एज ओवर करेंगे. I know we have got Oro's classification, Nelson's classification, Ashok Mitra's classification, उसको छोड़ दो क्योंकि यहाँ पर फोकस उनके क्लासिफिकेशन का नहीं है. इमेजिन करके देखेंगे हैरिस उल्मान के फंक्शनल क्लासिफिकेशन का एडिशन है. Think about it. When I say developing world will have the approach of development of urban node, urbanism, population growth, and more development of diversity because they are the engines of the growth there. Developed world is at saturation, but फिर भी mega cities as the node of culture and economic organization को prove करने के लिए क्या आप अपनी conventional functional classification of urban place propounded by Harris and Ullman, representing dash category that talks about all the diversity of the function that a urban place can be defined with. Can you suggest me the name? Which functional category of Harris Ullman is all inclusive mega cities? कोशिश कर रहे हैं. Drop in the answer. Examples बहुत आराम से आ जाएंगे. Harris Ullman identified urban places to be central places, specialized town and transport town. हम कौन से टाउन की बात करें यहाँ पर to enrich our answer? Central places. I hope all of you are agreeing to it. Can you recall the examples of central places? Take them as your case study. Let it be New York City. Let it be Beijing or Shanghai. Let it be London. Let it be Brisbane. I hope you are understanding it, class. Yes, let it be Paris. Add करें इसको white board पर. Add करते हैं. And then I again take the reference of this particular answer. It was considered to be a very difficult question. I don't find it to be difficult. Of course, yes, it was a dice. तो भाई लॉजिक है ना, जिस एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, इट इज कॉल्ड द डिफिकल्ट मोस्ट एग्जामिनेशन. तो आपको पिछले 20-25 साल के क्वेश्चंस, उनके मॉडल आंसर्स रेडीमेड तौर पर मिल जाते हैं विद बी फंक्शनिंग टुवर्ड्स गिविंग यू एन आउटले. तो एग्जामिनर कैसे उसकी डिफिकल्टी लेवल मेंटेन करेगा? यहाँ पर ऐड करना चाहिए इसको पॉइंट नंबर 3, क्योंकि ये जो अर्बनिज्म एंड डेवलपिंग वर्ल्ड है, इसको आप अपने वे फॉरवर्ड के पॉइंट पर कंक्लूड कर सकते हैं. तो इसको यहां पर, और जब आपने ये इकोनॉमिक एक्टिविटी लिखी है, यहां पर प्रूफ करने के लिए हमने अभी आपको एडवाइस करा दैट यू टेक हैरिस उल्मान. नहीं लगता लिखना है नाम, मत लिखो, बट लिख देने से क्या होता है, थोड़ा सा और स्पेसिफाइड आंसर बन जाता है. सो यू टेक एग्जाम्पल ऑफ हैरिस उल्मान and identify central places that are functional diversity. Cite examples. Prove your point that the small number of mega cities, primate cities, United States of America में ईस्ट और वेस्ट शोर पर ही तो आउटलाइन करते हो. सेंटर में एक ले सकते हैं, शिकागो ले सकते हो, but you are largely having it as east and west coast. So is Australia, so is China. कोई भी एग्जाम्पल लो. In China, 3 primate cities, namely Beijing, Shanghai, Guangzhou, accounts for major concentration of growth. So have I not proved that it is showing on the cultural and economic note? Developing countries को हमने way forward में रखा है. China is a very good example of the country that is developing even today, but has made maximum gain when it comes on to the reference of post-globalization growth and economic development, urbanization at par with developed world. आंसर बहुत आराम से तैयार है. एक और क्वेश्चन लेते हैं एग्जामिनेशन का. radicalism. Radicalism as the prominent approach in attaining centrality in the geographical dimension. Face value पर तो बिल्कुल hardcore geographical thought का क्वेश्चन है, बट अगर आप इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करने की कोशिश करो तो आपको आंसर की शुरुआत तो radicalism से ही करनी चाहिए. That you take up the reference of radicalism justified as what? An approach in geography. Gadget name, so Redmi, I don't know what is your name. I always advise you to come up with your name ID in the class.
ऐसे it becomes very awkward for me to address you that way. Any case, Redmi's question is central place function with including example. So please mind it here. We are not talking about central place concept propounded by Walter Christaller or August Losch. I'm talking about functional classification of Harrison Ullman, who say central places are those urban places that are multifunctional. Is that clear? So here you don't need to talk about the hexagonal sphere of influence and functional centrality. उसकी requirement नहीं है. तभी तो हमने आपको कहा ना Harris Ullman वाला point लिखना चाहिए. You are not required to write central place theory of Walter Christaller or August Losch for that. अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर जज करने की कोशिश करते हैं. If I take up the reference of बिल्कुल एकदम statement wise question को pick up करें, I'll just read it out. एक नाम देने से अच्छा नहीं है, so I just read it out. जो radicalism पर हमारे पास question आया, उसी के बारे में बात करें, तो I just take that into reference. I write the question quickly, ताकि judgment में आसानी रहे, है ना? So I write the question. Why radicalism is seen as major paradigm shift in geography. It's a 20-marker question. Explain its causes, approaches. इसलिए I thought that only term radicalism will justify. Because एक मिनट के लिए इस question को read करते हैं. Are you not noticing that this question is basically all inclusive of radicalism? If you agree, just give me go ahead. Is it all inclusive of radicalism? Is it giving me everything that I normally talk about radicalism included है? तो आ गया ना पूरा full proof type of question आ गया. अब इस question को आप difficult count नहीं कर सकते. This is something which is coming up as a very spontaneous, the way we normally learn in the class. It comes up there. Why radicalism is seen as a major paradigm shift in geography? You can easily start with paradigms in geography. कोई सा भी phase. Geography in pre-paradigm phase, geography with professionalism, geography with first paradigm, geography with crisis and revolution, geography with second paradigm phase. I hope you all are understanding. बहुत अच्छा है कि यहाँ पर कुंज paradigm का stageal diagram बना दिया जाए, क्योंकि इतना सारा लिखने का तो possibility होगा नहीं. You know what steps I have created. अगर हम मार्कर को थिन करके और इसमें फटाफट से एक डिटेल्स देने की कोशिश करें तो हम क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पर लिख रहे हो pre-paradigm, professionalism, paradigm phase 1, crisis and revolution, and paradigm phase 2. हो गया ना? कौन का paradigm का सपोर्ट ले लिया? फटाफट से हैंड रेज करिएगा. आपने एग्जामिनर को एक डायग्राम भी दे दिया इंट्रोडक्शन में, because I am taking up the key term from the question paradigm, and that too paradigm shift. Question पूछ रहा है why radicalism is considered to be a major paradigm change. तो आपने एग्जामिनर को paradigm बताया और paradigm बता के फिर आप एग्जामिनर को क्या प्रूफ करना चाहोगे, बहुत ध्यान से देखेंगे. That starting from modern pillars of geography to paradigms till 1970s, geography remained, and I will highlight the term remained, man environment study. प्रूफ हो रहा है, कैसे लिख रहे हैं? चाहे आप एनवायरमेंट में डिटर्मिनिज्म, एनवायरमेंटलिज्म, पॉसिबलिज्म, कल्चरल डिटर्मिनिज्म, कल्चरल पॉसिबलिज्म, प्रोबेबिलिज्म, किसी भी आइडिया को ओपन करो, मैन एनवायरमेंट था. क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, मैन इज रैशनल इकोनॉमिक क्रिएटर, सरफेस ऑफ द अर्थ, आइसोट्रोपिक प्लेन, मैन एनवायरमेंट है. ह्यूमनिज्म, बिहेवियरलिज्म, मैन एनवायरमेंट है. म्यूचुअलिस्टिक मैन एनवायरमेंट रिलेशन, यस और नो? So the point comes in that geography in its growth with multiple paradigm crisis and revolution maintained itself to be the study of man-environment relation. If agreed, give me go ahead. तो आपने इस पॉइंट से इंट्रोड्यूस करा तो आपने एग्जामिनर को ये तो बता दिया कि ज्योग्राफी हैज बीन अ कंसिस्टेंट केस ऑफ मैन एनवायरमेंट रिलेशन. चाहे आप उसमें क्राइसिस की भी बात कर रहे हो, रेवोल्यूशन की भी बात कर रहे हो, तो भी वो मैन एनवायरमेंट ही है. अब यहां पर सेकेंड पॉइंट मेरे ख्याल से बाय डिफॉल्ट आ जाता है, एन अप्रोच टू मेक ज्योग्राफी एप्लीकेबल डिसिप्लिन दैट एम्स एट डिक्रीजिंग सफरिंग. बड़ा ऑल इंक्लूसिव टाइप ऑफ टर्म बन जाता है, एक्सप्रेशन बन जाता है फॉर रेडिकलिज्म, एंड वी आर डिराइविंग इट फ्रॉम कैस्पर्सन.
तो बिल्कुल ऑफिशियल है। ऑफ कोर्स लैंग्वेज हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, तो वी राइट इट इन ब्रैकेट बेस्ड ऑन caste person, but it is coming from there. So it aims at suffering, common human suffering that can be due to gender, racial, economic, criteria, reason, कुछ भी कही। आपने एग्जामिनर को बिगिनिंग बहुत अच्छी दे दी, आपने बता दिया कि radicalism क्या है and why it is considered to be a major paradigm shift in journalism. अब इसके बाद क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो 3 टर्म्स आपको दे रहा है, कॉजेस, अप्रोचेस, क्रिटिसिज्म। कॉजेस, वियतनामीज वॉर, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन, ये हर एवरेज स्टूडेंट लिखेगा। आपको अपने आंसर को अबव एवरेज बनाना है। पब्लिकेशन ऑफ एंटीपोड, a confident hand raise, all of जितना massive viewpoint exchange is welfare journal that marked up its beginning of publication since 1969, Lake University, United States of America, supported by Association of American Geographers, spread out very prominently. अच्छा example है, apply करते हैं। It is an excellent example of contagious diffusion. इतना मेजरली स्प्रेड आउट हुआ that human geographers started having a platform of the viewpoint exchange कि I am not only thinking on that line. तो एंटीपोड का पब्लिकेशन जरूर लिखना चाहिए। कॉजेस पूछा है इसलिए, नहीं पूछा होता तो एक लाइन में आप उसको रोपिन कर देते। अब आगे बढ़े, अप्रोचेस के लिए क्या करें, जूम अप करके लिखते हैं। एज सून एज आई टॉक अबाउट अप्रोचेस, एडवाइजेबल तो यही है कि आप अप्रोचेस के साथ साथ क्रिटिसिज्म को रोप इन कर लें, नहीं तो फिर रेपिटेटिव एरर आ जाएगा। हम प्रूफ कर रहे हैं। अच्छा, अप्रोचेस को हम कैसे डिवाइड करते हैं? वी डिवाइड अप्रोचेस एज एकेडमिक ओरिएंटेड, रैडिकल्स एंड एक्शन ओरिएंटेड, लिबरल्स। अब हम आपको 1:1 सारे स्कॉलर्स की डिटेल्स में तो बिल्कुल ले जाने के मूड में नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें आपको क्विक लीड दें, एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू विल रेडीली रिकॉल देम, कोई भी क्विक लीड दो। यहां पर विलियम बन जाएंगे, डेविड हार्वे आएंगे, यू नो व्हाट काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशंस दे हैव मेड, एंड यहां पर यू कैन इजीली टेक ज़ेलेंस्की, यू कैन टेक कॉग्स एंड मैसन, यू कैन टेक नॉक्स's कंट्रीब्यूशन, और स्टार मार्क के साथ लिखेंगे डेविड स्मिथ एंड पीट। इनके पॉइंट पर तो हम क्रिटिसिज्म नहीं लेते, but William Bunch, David Harvey, and their extreme approach of nothing short of revolutionary change. जैसे ही आपने उनका अप्रोच लिखा, आप हैंड इन हैंड उनका क्रिटिसिज्म भी बता दो। I think that makes the answer quite consolidated. And when you get on to the action-oriented people, they are more practical. But वहां पर भी तो प्रॉब्लम्स है ना जो आप बहुत इजीली रिकॉल कर सकते हो। लाइक ज़ेलेंस्की टॉक्ड अबाउट मैपिंग डेमोग्राफिक लोड, पूरा लिख देते हैं जियो डेमोग्राफिक लोड। और नॉक्स ने ये क्वेश्चन करा कि अगर सिर्फ पॉपुलेशन साइज सफरिंग को डिटरमाइन करती है, तो पॉपुलेशन के साइज के हिसाब से तो चाइना में सबसे ज्यादा सफरिंग होनी चाहिए। इज कॉमन ह्यूमन सफरिंग ड्यू टू पॉपुलेशन साइज? नो, it is due to fulfillment of need. I'll write satisfaction because that becomes much more relative of needs. तो आपने criticism और उसका appraisal hand in hand दे दिया। अगर आप इसको अलग करोगे, then what will you do? You will take an repetitive error in your answer. तो ये तो आ ही गया ना पूरा का पूरा, the way we study radicalism. Radicalism as an approach in human geography, where we give active and central role to humans, but absolutely unlike humanism, it is all about spatial organization of society. लिख देना इसको भी यहाँ पर, Cogs and Mason, unlike humanism. इसलिए तो इन सबको हम aerial differentiation में रोप इन कर लेते हैं। They all are ideologies that justifies validity of aerial differentiation. कुछ क्लैरिटी आ रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम लिख सकते हैं। इट्स जस्ट नीड प्रैक्टिस, इट जस्ट नीड्स ब्रशिंग अप ऑफ द डस्ट दैट हैज गॉन इनटू। क्या होता है जब किसी चीज को, आई जस्ट वांट टू स्टॉप स्क्रीन शेयर फॉर अ व्हाइल अगेन, जब आप किसी चीज को रेगुलरली रिपीट या रिवाइज नहीं करते, इसलिए कहते हैं ना रिविजन इज अ कंसिस्टेंट थिंग।
एंड रिविजन करने के लिए आपको अपने नोट्स पर डिपेंडेंट रहना चाहिए। आपने नोट्स किसी भी सोर्स से बनाया, स्टैंडर्ड बुक्स को लेकर बनाया, स्टैंडर्ड बुक्स प्लस द कस्टमाइज नोट्स को लेकर बनाया, या आपने जैसे भी बनाया, आप उन नोट्स का रेफरेंस लेकर जब किसी क्वेश्चन को पिकअप करके उसी के मल्टीपल फ्रेम को पिकअप करके आंसर बनाने की कोशिश करते हो, तो व्हाट एग्जैक्टली यू एनकाउंटर कि आई कुड नॉट मेक सेंस विद टर्म, I could not highlight the key terms asked, I could not make sense with the question, I could make sense with all these, but I found that I was not having content to write. I was having content to write, but there was an absence of diagrams that were flashing up in my mind. I was aware of diagrams, but there was no time left out for me to make it. So it can be anything. It can be problem relating to time management, problem relating to content management, problem relating to diagrams, problem relating to make it. Remote sensing technique में जब the electromagnetic spectrum जिसको हम scan करते हैं, when it is returning back from the object to be sensed by the sensors, हम उसके लिए क्या term use करते हैं geographic information system में? Spectral signature. I want you to develop that. कि भाई जब ट्री उसको रेडिएट बैक या रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है फॉर द सेंसर टू स्कैन इट, टू गिव यू दैट देयर इज अ ट्री हेयर और देयर इज वाटर हेयर, दैट इज द सिग्नेचर ऑफ द ट्री। वो प्रूव कर रहा है सेंसर को कि यहाँ पर एक ट्री है। आपको ऐसा ही स्पेक्ट्रल सिग्नेचर क्रिएट करना है, योर पर्सपेक्टिव, योर व्यू पॉइंट, and that makes the difference. I hope you are understanding. अब हम क्या करना चाहते हैं, हम आपको 2 क्वेश्चंस देना चाहते हैं। मुझे बिल्कुल पता है ओरिएंटेशन क्लास है, उसमें भी क्वेश्चन क्यों मिले। हमने रैंडमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिकअप करे फ्रॉम द लास्ट ईयर एग्जामिनेशन, जिसमें हमने जज करा कि भाई कोई क्वेश्चन तो बड़े ही आसान है, कोई क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट लगे फेस वैल्यू पर लिखने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर थोड़ा सा सोचा। तो what I'm doing is I'm writing 2 questions. कल हम इसी के फ्रेम के साथ आंसर की क्लास की शुरुआत करेंगे। Though I'll be focusing more on physical part with some aspects of Indian geography. जब आप फिजिकल और ह्यूमन का पर्सपेक्टिव ले लेते हो तो इंडियन पर्सपेक्टिव में उसको बस जूम इन करना होता है। तो I'll take some sample questions with India also. बट मेरा मेन फोकस फिजिकल ज्योग्राफी पर रहेगा। कल आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं एंड आई एडवाइज कि आप एक जरा इसके बारे में सोच कर एक थोड़ा सा फ्रेम करके आओ। हम आपसे ही पूछेंगे, माइक ऑन कर देंगे आप लोगों का, आप लोग अपने आंसर हमें बताना और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस लिखो, 20 मार्कर जज करके चलते हैं इनको। क्वेश्चन 1, पॉपुलेशन मेक्स द नोड ऑफ ऑल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज। हमने क्वेश्चन अपने टेस्ट सीरीज में पहले पूछा हुआ है। हम आपसे चाहते हैं कि आप इसके बारे में सोचो और थोड़ा सा इमेजिन करके क्वेश्चन को हम किस तरह से इसके बारे में फ्रेम कर सकते हैं, थोड़ा सा फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी हम इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको बस कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचें और इसके बारे में एक डिमार्केशन डेवलप करें। ठीक, ओके। नाउ आई वांट टू मेक अप वन मोर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी आप लिख लो, आई एम राइटिंग इट, आप कॉपी डाउन कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन जो हम चाहते हैं आप लिखो, 2014 में इसका इजियर वर्जन एग्जामिनेशन में आया हुआ है, इलैबोरेट ऑन द कंसेप्ट ऑफ मेंटल मैप। हम वैसा क्वेश्चन नहीं, हमने थोड़ा सा डेविएटेड क्वेश्चंस बनाया है, हम चाहते हैं आप उसके बारे में। एनवायरमेंटल परसेप्शन इज बिल्ट ऑन, both of them are 20 marker question. I don't just want you to create out the frame of answer for them, I want you to suggest me diagrams क्या क्या बना सकते हैं इसके, what range of diagrams you can create if this is the question. These are the questions that are being asked. Environmental perception is built on cognition and aesthetics. हमने आपको 2 questions दी। Population makes the node of all development strategies, and environmental perception is built on cognition and aesthetics. Can I stop the screen share now? क्या लिखेंगे if the question is about cognition, aesthetics? क्या फ्रेम लेकर लिख सकते हैं आंसर को? चलो आज सोचो, कल हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं and we'll talk about another session which will be talking about, which will be considering physical and part of Indian geography. हम definitely जो contemporary age से related topics है like agriculture, industry, एक जनरल स्निपेट तो ले सकते हैं,
but we want to focus on those hardcore topics जो prepare एक बार हो जाएं तो उसमें बस content building की requirement रहती है. So that will be our focus. So I close down today's session by saying tomorrow we'll be taking up a perspective of how to develop out the content when it is the question on physical geography, which definitely has got a dynamic topic to it. Bio and environment geography, I cannot call it to be a static topic. So bye-bye from my side for the time being. Any questions, you can certainly drop on mail and please try to frame up the answer for it. Bye-bye, take care. See you tomorrow, same time.